हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने डिजिटल एड्यूशाला संजीवनी क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चीफ सियाटल स्पीच के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चीफ सियाटल स्पीच, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द प्रोज सेक्शन कंटेंड इन Treasure Trove, the book prescribed by Icse for class 9th and 10th. In this video, we will talk about background, introduction, when and why was the speech delivered, and division of Seattle's speech into subsections. We can divide the speech given by Chief Seattle into 5 subsections: environmental values, concern for his tribe's identity, Red Indians versus White Americans, terms and conditions, and concept of death. Majority of the students consider this chapter to be one of the most complicated chapters prescribed in the syllabus. It seems complicated because it isn't any fancy story. Rather, it is based on historical events. You only need to change the way you read this chapter. आपको सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ने का अपना तरीका बदलना है और फिर यह चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा. To have a commanding grip over this chapter, we need to understand its background as well. बात करें अगर इस चैप्टर के बैकग्राउंड की, तो हमें बस एक साल को अपने दिमाग में रखना है और वह साल है 1853, 1853. In 1853, the territory of Washington was established. 1853 में वॉशिंगटन टेरिटरी का स्थापना हुआ और इसी साल यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जितने भी नेटिव अमेरिकन्स हैं, वैसे अमेरिकन्स जो बाहर से नहीं बल्कि खुद उसी जगह पे पहले से रह रहे थे, उनसे जमीन खरीदकर नॉन सेटलर्स को दे दिया जाएगा. नॉन सेटलर्स से मतलब था वेस्टर्न यूरोप से जो लोग आकर अमेरिका में बसना चाह रहे थे. इसी उद्देश्य से 1853 में जो यूएस गवर्नमेंट थी, उसने डिसाइड किया कि जितने भी ट्राइबल पीपल हैं, उन सब के लैंड को एक्वायर किया जाएगा और वही जमीन, वही लैंड नॉन सेटलर्स को, जिन्हें हम वाइट अमेरिकन्स के नाम से भी जानते हैं, उनको प्रोवाइड कराया जा सके. और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिका में रह रहे अलग अलग ट्राइब्स से लैंड ट्रीटी एग्रीमेंट साइन कराया गया, जिसमें ट्राइबल पीपल के लैंड को यूएस गवर्नमेंट एक्वायर कर रही थी और उन्हीं लैंड्स को नॉन सेटलर्स को प्रोवाइड कराने का काम किया जा रहा था. Friends, if you are asked, what is Seattle's speech? Seattle's speech is regarded as a powerful plea for respect of Native American rights and environmental values. It is regarded as one of the earliest speeches that shows concern for the ecological balance. Before we talk about the points discussed in Chief Seattle's speech, let us first know who Chief Seattle was. He was a public leader, the chief of the Native American, or what we call as Red Indian, Suquamish and Duwamish tribes. The American city Seattle is named after him. His father belonged to Suquamish tribe and mother to Duwamish tribe. He was an efficient leader and orator. He is also self-critical as he disapproves of the impulsive behavior of his own young people. Overall, Seattle is a man with great understanding and leadership qualities. He is also respectful not only to his ancestors and their words, but also to the white settlers. Now we shall talk about when and why was this speech delivered. The speech was delivered in 1854 in his native language, Lasotsit. This speech was a response to the American government's land treaty to buy the native lands proposed by Isaac Stevens, the governor of Washington Territory. स्पीच 1854 में दिया गया था और यह स्पीच इंग्लिश नहीं बल्कि उसने अपने नेटिव लैंग्वेज
लसहुड में दिया था। यह स्पीच तब दिया गया जब सर इसैक स्टीवंस एक लैंड ट्रीटी का प्रपोजल लेकर सुक्वामिश ट्राइब के पास भी आए थे। गौर करने वाली बात यह है कि हालांकि यह जो ट्रीटी था यह 1855 में 1855 में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ फिर साइन कर लिया गया था। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि चीफ सियाटल ने अपने स्पीच में किन मेन पॉइंट्स के ऊपर बोला था। उनमें से पहला था जो कंसर्न था वो था इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। Seattle criticized the white people's imperialistic attitude and their way of reckless developments affecting the natural environment. He also warned us against the rapid progress of Western civilization and pitched for the need to protect nature. The second important thing that can be traced in Seattle's speech was his concern for his tribe's identity. Seattle ने अपने स्पीच में अपने ट्राइबल पीपल के बद से बदतर हो रहे कंडीशन के बारे में भी बताया था। उसने यह भी कहा था कि किस तरह से एक समय ऐसा था जब उनके ट्राइब के लोग पूरे अमेरिका में फैले हुए थे, पर अब कंडीशन बिल्कुल विपरीत हो चुका था। अब वो विलुप्त होने के कगार पर थे। सियाटल द्वारा दिए गए स्पीच में अपने ट्राइब और ट्राइबल पीपल के प्रति उनका लगाव स्टार्टिंग से एंड तक देखा जा सकता है। The third and the most important topic on which Chief Seattle talked about in his speech was Red Indians versus the White Americans. For this doom of the Red Indians, Seattle mainly accuses the white people's act of forcing their way into the native lands. The white people regard themselves as superior and supreme and do not respect the tribal people's land rights and cultural values. Seattle also criticizes the reckless manners of the young man of his own tribe. According to him, the youth should be more sensible and responsible. रेड इंडियंस की इस बदहाली के लिए चीफ सियाटल वाइट अमेरिकन्स को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, क्योंकि उनके आ जाने से नेटिव अमेरिकन्स को अपना लैंड छोड़कर जाना पड़ रहा था। वाइट अमेरिकन्स खुद को ज़्यादा सुपेरियर और सुप्रीम समझते थे और वो ट्राइबल पीपल के ना तो लैंड राइट और ना ही कल्चरल वैल्यूज़ का रिस्पेक्ट करते थे। सियाटल अपने ट्राइब के नौजवानों से भी ज़्यादा सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल होने की अपील करते हैं। Seattle says the president has offered to protect the native women, children and the old men from the attacks of their old outside enemies like the Haidas and Simpsons if they agree to the land treaty. In that case, the president would really be their protector, their father. But he doubts if that will be ever possible. अपने स्पीच में सियाटल कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने जो लैंड ट्रीटी का ऑफर भेजा है, अगर लैंड ट्रीटी पे साइन कर दिया जाए तो वो उनके प्रोटेक्टर बनेंगे, एक प्रोटेक्टिव फिगर बनेंगे और रेड इंडियंस को बाहर के अटैक से बचाएंगे। पर चीफ सियाटल के मन में संदेह था कि क्या ऐसा पॉसिबल है। सियाटल के अकॉर्डिंग वाइट अमेरिकन्स और नेटिव रेड इंडियंस के बीच बहुत अधिक कल्चरल डिफरेंसेस थे, इतने अधिक कि दोनों के बीच कोई भी समझौता पॉसिबल नहीं लग रहा था। हो भी क्यों ना, दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट जो थे, दोनों एक दूसरे से रहन सहन में, माइंडसेट में बिल्कुल अलग थे। Seattle says the white people have received all the love and care of God. The tribal people have been deprived of the love, guidance and protection of God and finally come to their meager existence. To the tribal people, the ashes of their ancestors are sacred and they visit their resting ground to show their respect for those. But as Seattle complains, the white people have no feelings for their ancestors. They wander far from their graves without any regret. Seattle also says in his speech that the white people don't seem to love this world anymore after they die. So they never visit their people and places again.
But the tribal people never forget this beautiful world that gave them being and continue to visit their loved ones to guide, console, and comfort them. Seattle also pinpoints that the white people's religion, that is Christianity, is written upon stones so that people never forget it. It is not felt by heart. Their religion is somewhat artificial and mechanical, as they have no respect for the environment and for their ancestors. But the native people's religion is the traditions of our ancestors, the dreams of our old men. Taking a very practical decision, Seattle says that he may still agree to the government's proposal, but the natives should be allowed to visit the resting grounds of their ancestors. He says that tribal people consider their native place as holy and their entry should not be stopped even after the treaty is signed. Regarding death, Seattle says that no one will be spared from the hands of time, death, and decay. Death is a common destiny that the white man too cannot defy. Towards the end of his speech, he again warns the president to be just and deal kindly with his people. He believes that death is just a change of words and the spirits of the natives will still be there after their death to take revenge if they are treated badly. If you like this video, do like, share and subscribe my channel. See you in my next video. Till then, keep learning, keep watching.